तो हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो उसी एपिसोड को हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, वहीं से कंटिन्यू है ये एपिसोड। मैं इकट्ठा खेल रहा हूँ, लेकिन आपको मज़ा आएगा देखने में, ये तो मुझे पता है। तो अब हमें यहाँ से निकलना है। जैसा आपने देखा, हमने आर्टिफैक्ट ले लिया है और काफ़ी चीज़ें कर ली हैं। अब यहाँ से निकलना है। वेटिंग फॉलोअर्स, ठीक है, निकलते हैं यहाँ से फिर। चलो। आई होप कि हमें कुछ ज़्यादा ऐसा ना करना पड़े। सीधे वहीं पहुँच जाएंगे क्या? ओके, हमने शायद इस यूनिवर्स से यहाँ से निकल चुके हैं। ये क्या? थोड़ा पीछे हटोगे सर, हम तो निकलना है आगे। ये राफिल कहाँ गया? ठीक है। और राफिल, निकलते हैं। ये आ जाए फिर निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ ये हमारा शिप है यहाँ पे। Oh! Need a moment to walk that off? कैसे बाहर आ गए उस चीज़ से? तो ये चीज़ मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। आई थिंक यहाँ पे ना मैं ये ज़्यादा बढ़िया। चलो, बात करनी है एंड्रेजा से। Did you need something? नहीं। चलो आओ फिर एंड्रेजा पीछे। ओके, उसके पास जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं। Yes? चलो चलें। I will watch your back. ओके, अब हमें करना क्या है? अच्छा, ये सब हमारे साथ आने वाले हैं। ग्रेट। अब यहाँ से कहाँ जाना है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। इज नो लॉन्गर फॉलोइंग यू। It's over. It's finally over. I can't tell you how grateful I am to be out of there. Thank you. If you don't mind, I'll tag along until we get back to civilization. Anywhere will do. I can catch a ride back to New Atlantis on my own. And then, if you ever need an engineer, or just want to talk, look me up at the viewport. I owe you. How are you doing? What are you going to do now? I am, but not right now. Okay. Let me get back to New Atlantis, get some rest. And then, yes, it's the least I can do. Okay. After all you've done for me. चलो सही है, से न्यू एटलांटिस छोड़ना चाहे था मैं ना। हमें ये समझना है कि हमारा मिशन क्या है अभी, सच में। अब इससे पूछना, शायद इसे पता हो।
What did you need? Do you have anything to interest of me and Aisha? ना अभी नहीं. आई थिंक हमें ना यहाँ से बाहर निकलने का कुछ देखना पड़ेगा यार. कोई ऐसी जगह जहाँ हमें भी जाना है. लॉ चलते ना सीधे सीधे. हो सकता है कुछ काम की हो. I think I prefer the wild planets to this city. At least there, the predators are easier to spot. अच्छा वाफिल से वहाँ बात करनी ना पहले. चलो पहले वाफिल से बात करते हैं ना. तो गाइस हम आए हैं व्यू पोर्ट. राफेल जिसको हमने पिछले मिशन में बचाया था उससे बात करने आए हैं. देखते हैं ये किस काम आएगा हमारे, है ना. Hey, it's good to see you again. I was wondering if you were going to stop by. Thanks again for getting me back to New Atlantis. The viewport still makes their drinks just the way I remember. You look a lot better than you did last time we spoke. I feel a lot better too. Steadier. More like myself. I'm still a little shaky, but I'm doing much better than the last time we met. And my engineering skills are no worse for wear. Have you given any more thought to taking me on as an engineer for your crew? I'd be my pleasure. Welcome aboard. I think you'd be better to stay in. No. Are you serious? You'll Yeah. really give me a chance? I wasn't expecting that. Thank you. I don't know what to say. लेकिन बस काम करते ही भाई. ठीक है ये लगा हुआ है. लेन और ये दोनों शिप पे हैं हमारी. ठीक है. आउटपोस्ट हमारे चाहिए. डेमोलिशंस. आउटपोस्ट इंजीनियर. स्टारशिप इंजीनियर. ठीक है ये थोड़ी बेटर है. जेमिसन एंट्रेजर हमारे साथ है. द लॉज बैट ये ज़्यादा बेटर है ना शिप के लिए. बट ठीक है ये हमारे साथ शिप पे नहीं लगेगा ऑब्वियसली. राफेल और लिन. ठीक है. You have my word that you won't regret this. I'll do my best to live up to your expectations, Captain. Really. ओके ये फ्री में लगे. बहुत अच्छी बात है. हमारे पास पैसा कितना है? 1,43,000 है ना. और वो जो शिप हमने देखी थी लास्ट टाइम आई थिंक 40. Not sure if those Varun zealots live in space or got separated from their home planet or what. हमारा मिशन क्या है? कोई मिशन है अभी? Lots of old facilities left over from the colony war, and they like to pick 'em clean. बिकॉज मिशंस में चेक करते हैं ना. Unearthed. ये फैक्शन मिशंस हैं. ये डिस्क हैं. क्या मिशन गए इसमें?
wait for the service for UT days. The emissary has given me a key to a base Luna's Earth's most. और इसमें क्या? Noel is putting a memory service together. I should keep on an eye. यहाँ पर इसे आई थिंक बंद करके मैं इस पे जाना चाहिए. ज़ीरो पे कुछ आएगा क्या? इस पे कुछ लगा सकते हैं क्या हम? अभी शायद कुछ लगाने का टाइम नहीं है. अभी हम किसी और मिशन पे जा रहे हैं शायद. कोई मिशन है भी या नहीं ये नहीं पता मुझे. Enjoy New Atlantis, but this is much better. तो गाइस हम आ चुके हैं वापस लॉन्च राफेल से बात करने के बाद. मुझे लगा ये कोई है. वहाँ चलना है क्या? Constellation has suffered losses before, although This is amazing. The unity, the multiverse. This is everything and more, literally. There's a lot unpack here. KEEMATI is not ready for this. Who says? Thankfully, we aren't in charge of preparing humanity for the next big milestone of our species. Okay. This explains so much, though. They're disorganized, petty, weird, and also deeply fascinating at the same time. Because they are just people. We never rule that out, but it feels so good to know we weren't fighting against robot alien ghost gods or something. Their monster people have suffered because of their nonsense. Forget about the star bond. The unity is the center issue here. True. We need to approach this critically and carefully. We can't just jump in. Or, I mean, we could, I guess. But it all comes back to this. We don't know what will happen if you enter the Unity. You might lose yourself or become a two-headed space shark. There are too many variables. हाँ कुछ भी हो सकता है. I even might be out here, you know. Or maybe I just exactly who I am. Yeah, even so, I don't see how we can't do this. I really don't see another option. Of course, at the end of the day, it's your choice. But I will say this. Our entire purpose in Constellation is to explore. Why would we stop now? वही तो. Agreed. I'm with you. I'm not going to hold you back. But if you know, become evil or whatever, I'm also not going to have your back. Anytime. The possibility of turning evil aside, I appreciate you taking the lead on this. You're guiding Constellation to new frontiers, new discoveries, and we should all follow your example. Thank you. On that note, there's something else I'd like to discuss with you, if you have time. हाँ. It's not on the scale of entering the Unity, but it is tangentially related. I have time. Tell me what's on your mind. Thanks. This has been swirling in my brain goo for a while now. So, I've been pondering over what's happened and what it all means. And I've got a favor to ask. A teensy-weensy favor. About the size of a plank length, really. I think it's time I joined you in the physics-bending powers business. See if one of those temples works for more than just you.
That's actually a pretty big favor. I don't know if we have time for that. You can get power too. Let's go get your power then. Marvelous. I'm glad you're as gung-ho about this as I am. Okay. As it so happens, I've already talked to Vladimir. Seems our eye in the sky is back up and running. He sent me the coordinates for the temple already. We just have to visit. Okay, words apart. But पहले ना हम वहाँ मिल गए क्या? Talk with Sam Code, okay. और पहले ऊपर चल के देखें बात करनी है क्या है क्या नहीं. ओके सोना है हमें. वेट अंटिल मेमोरियल. चलो मेमोरियल जाके अटेंड करते हैं ना. सारा की डेथ हुई थी तो जैसा कि नोवेल ने नहीं रखा था कि हमें मतलब कुछ उसके लिए थोड़े बहुत चीज़ें करेंगे जब एक कोई इंसान मर जाता है तो उसके लिए. तो वैसे ही कुछ है यहाँ सारा की याद में. I thought maybe I would come up with something to say, but I've got nothing. So instead, I thought I would quote something that gave me comfort a long time ago. Is God real? The more proper question would be, is reality divine? Existence itself is a mystery which yearns to be uncovered. What is goodness but a comparison to the good? What is existence but a participation in being? For where the diversity of the universe inspires awe and wonder, it exists only in contrast to a simplicity so pure that it may only be understood as primordial and even divine. Our essence is what was imagined by its mind. But what we consider imagining and what we consider mind are in fact so far beyond our understanding that even these metaphors are like the tiny whitecaps on a massive surging sea. There's more, but those are the parts that speak to me the most. Thank you. That was really thoughtful, Mateo. Thank you. Does anyone else want to say anything? Yeah. Actually, I won't. But I don't know what. I let Sarah down, I let conversation down, I'm sorry. Sarah know the danger we faced. But than anyone, she's my friend. She's more than just conversation chair, she was the best among us. I'm going to miss her for the rest of my life. Thank you. If anyone else wants to say something. Leave when you are ready.
Everyone is in mourning. I understand, but I cannot quite share in their emotion. It's one of those A occasions. lot of us are in shock. It's normal. I have seen death. I have lost people I considered close. But this is... It is not the same. I cannot explain why. I am not sure I am making sense. We are what lives on. The pain of loss inspires us to greater action, then that There's no sense to be made anyone of this. There's no sense humanity to is what truly creates us. Thank you. We are the ones that judge things to be good, Can we speak for a moment? Okay. joyful. This is harder than I expected. Let us take responsibility am- for it. Reminded of how different Constellation Let's works remember, compared to what I'm used to. Walter, are you I am sorry. part of the House of Enlightenment? My head is swimming. I never knew It's that. okay. I am sorry. yes, well, My head is swimming. like to keep some things private. This is harder than I expected. छोड़ो निकलते आओ. इसमें लिखा है leave when you're ready. Speak to anyone. Everyone, sorry. And जैसे हम बात कर चुके हैं. वॉल्टर से बात करें. You all might not like Chat me. for a bit? Normally, I hate talking to people at funerals. But well, Decomposes. Gets eaten up by insects and microbes. I guess it's Or not gonna due be to so the easy. lack of a biosphere where You don't believe in the afterlife, do you? I mean, this might be the worst time to bring it up, but get pulled at I some don't know. Guess I gravitational find field out and when I coalesce get with there. other debris. Not comforting, huh? it's comforting, isn't it? You haven't really lost someone. You're just waiting to see them again. And you don't even need proof. You just need to believe it. Well, I've taken up enough of your time. Just sit still. Right there is the comfort that I need. Yeah, we die. And some people It almost feels wrong to be grieving. Selfish. No amount of tears will bring the dead back. expanding. And who wouldn't want to be a part of infinity? Even if it's just for a short It's just easier to feel guilty, if you'll excuse me. Okay. Of course not. ये कौन We है? emerge from the universe as I don't believe we met. Ajay Mamasa, former chair of Constellation. I wish the Okay. circumstances of my visit were better. That ये है वो certainly आजा. was an Thank you interesting for coming. perspective there. Unfortunately, this isn't the first Constellation funeral I've been to. After 35 years, you say goodbye to a lot of friends. I hope you don't mind me saying, but I feel numb just thinking about it. Sarah meant the world to me. She was the future. I knew it as soon as I met her. Exactly the same as when you met her, I bet. Determined. Fearless. With just a small hint of delight on her face when she knew she was winning, eh? My only problem as a mentor was trying to convince her to be more tactful. Those old military instincts would always get her in trouble. चलो सही है. You know, what you're feeling right now is a chemical reaction whose evolutionary goal is promoting social cohesion. Never seems to work for me. No matter how many times I do this, I feel less attached, not more. Well, look at us. Two lone wolves howling at the moon on the same night. You know, if there's one piece of advice I can actually give you, it's that lost loved ones have a way of coming back to you. One day you'll be sweeping out some old shelf or digging through a desk, and there it'll be. Some old paperweight of theirs, or a piece of jewelry they gave you, half jokingly, theoretically, of course.
You're welcome. नोवेल से बात करनी है ना. I hope this is all okay. Between fixing things up and sending out messengers and getting all the paperwork done. It's not much. It's fine, Noel. I could have done more to help you, you know. No, it's fine. Sorry, if I talk any longer, I'm gonna start crying. Okay. Could you excuse me? Yeah. I am told these types of gatherings are a sad vacation. That assumption appears to be correct. That's right, Vasco. Can you feel emotions? No, I don't. Machine hai na? I'm programmed to analyze sensory and biometric data so I can cross-reference. But I do not feel as you seem to imply. I appreciate you verifying my analysis, although I am certain my thanks will do little to improve your current psychological trauma. If you would like, though, I can add some consoling language to my programming. Very well. I can't do this. Your dad, there's no point in talking. I miss you. I wish you had not this had not happened. See each other again, I promise. The stars. ये इस गेम में को हम पता जी रहे हैं इस गेम को. इस सिर्फ गेम नहीं है, मतलब एक तरह से फीलिंग्स के साथ ये सब करना पड़ता है. मतलब समझो बात को ना, हर एक चीज़ बताई नहीं जाती. लोगों से बात करना, जैसा किसी का फ्यूनरल होता है तो हम लोग जाते हैं, थोड़ी सी सांत्वना देते हैं सभी को, इस तरह का सीन. Hi. Are you okay? No. And don't keep asking. I'm not gonna be, alright? Everything's worse now. So look, I'm literally the last person who should be talking to a kid but here I am. Is talking supposed to make us all feel better? Is that why we're all here? We have lost someone only natural to come together. But if we drift apart now, I won't be able to help each other. That's my point. Nothing's going to change. Obviously. I just feel like I want to be a million light years away from everyone. I want to be alone for a while, okay? सभी की फीलिंग्स की बात लगी पड़ी है. Is it quieter in the lodge, or is it just me? Voting against Sam. Death is a bastard. Comes for us all. You know, there's an old Aquila story about two pioneers who got lost trying to find a new frontier to settle. One of them takes ill. Clear he's not going to make it. He turns to his partner and says, "Don't bury me. Let the ground take what it's due. I'd rather be a ghost chasing after you than walk through the pearly gates knowing an eternity of loneliness until you get there." Sad story, huh? Yeah.
You look after yourself. When the time's right, I'd appreciate a chat. Okay. Drink? Pour one out to the blackest sea? No drink. My round to be wide. Two old friends. May their ghosts go past the edges of space, to the great beyond. To old friend. Aye. Leave when you are ready. पहले से बात करते हैं सैम Got से. a lot of sad tales I'm running through my head right now. Hate to bore you. Good talking to you. Yeah. चले. I am reminded of how different Constellation works compared to what I am used to. यहाँ सभी के हाल बहुत बेहाल हैं. या जब कुछ भी कहीं भी कोई सैड मोमेंट होता है ना तो थोड़ा सा हम उस चीज़ को फील कर पाते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं. Hey, you might want this. चलो आप सबसे मिलते हैं नोवा गैलेक्टिक रिसर्च स्टेशन पे. वहाँ का मिशन है. चलो वहीं मिलते हैं आपसे, ठीक है? चलो. तो आ चुके हैं शिप पे अपने. चलो निकलते हैं नोवा गैलेक्टिक के लिए. यहाँ से देखते हैं कहाँ जाना है. सोल ठीक है. चलो सीधे आ गए हम लूना पे, यानी आई थिंक अर्थ का चांद है शायद ये, मून. हमें यहाँ शायद सूट की ज़रूरत पड़ेगी ना. कंफर्म है सूट चाहिए पड़ेगा हमें. वो सूट पहनते ना फिर. चलो चला जाए. पक्का सूट चाहिए था. सही किया हमने. इन्वेस्टिगेट क्या था ये? रिसर्च स्टेशन. कहाँ है? अच्छा ये शिप आई. ये स्पेशल्स की शिप होगी जहाँ तक मुझे पता है ना. गैलेक्टिक रिसर्च स्टेशन. ये सही है यार, उड़ते उड़ते पहुंच जाओ. वर्थ होगी शायद, है ना? इसके अंदर कैसे जाएंगे? अच्छा रास्ता ये है शायद. मून बेस की.
खुल गया, मुझे लगा खुलेगा नहीं यार ये। चलो अच्छा है, खुल गया तो ज़्यादा बेटर है। बैरिट बाहर ना रह जाए। बिल्कुल आ जाएगा वो। यहाँ चेक करते हैं यहाँ क्या हुआ है। Looks like everybody, you're carrying a lot. अरे वो चाबी उठाई है बस। Volunteer, I want to remember the research team. ठीक है। You want to take a moment to shuffle things around? मैं इसके रूफटॉप पे जाना है क्या? Play the recording on the roof. Okay. रूफटॉप पे बाहर से ही जा पाएंगे ना, यहाँ से थोड़ी जा पाएंगे ना। अच्छा ये बाथरूम है, ओके। Orange, obviously. Okay, confession time. Being single on a moon base is the worst. I only get like an hour to use the communication link to Earth every couple of days. And let me tell you, there's long distance dating, and then there's like long distance dating, you know? Oh, hey there, I'm a scientist, deadly employed, willing to take you out for coffee in like 6 months when I'm back from space. It's not a great... You ever get jealous? You know, the crew in the shipyard? Building the actual vessels that are gonna travel the stars? We're literally on a base on the moon. Oh, come on, Sabina. I'm trying to share my dreams here. Well, your dreams are always out there and never here where the rest of us live. Can't you just be happy doing your job? Where's the fun in that? यहाँ से सीधे छत, बाहर से छत पे जाना पड़ेगा क्या? Okay, Nova Galactic Project Log, Principal Engineer Lang Shu. Voltaire is being reconfigured for this new initiative. The math we're being asked to crunch is ambitious, even for a supercomputer. We might as well be asking it to count every grain of sand in every desert on Earth. Who came up with these original equations? Our partner isn't being very open about it. Every question I have goes through some discretionary channel. I'm surprised. Voltaire really is something else. A supercomputer so powerful they put it on the damn moon to keep it cool. Although by that logic they should be running it purely in the vacuum of space. But hey, good marketing material. I've been spending some off hours running some dumb simulations just because I can. My favorite so far is simulating the sound of every duck on Earth quacking after receiving a piece of bread. You didn't know you wanted a real-time sim of feeding all the ducks, but now you have it. You're welcome, humanity. हमारे पास सारी स्लेट हो गई हैं उनका। छत पे जाके प्ले करना है।
engine spin-up time almost complete. Total time 5 minutes 22 seconds. Right on schedule. How are the helium-3 valves holding, Nova? We double-checked the leakage concerns this morning before the launch. All signs green. Any changes to the calculation sequence from Voltaire? No changes since we uploaded the last figures yesterday. It's a clean shot from here to Jupiter. One day the computer will be on board the spaceship. Just imagine that. There's that little One sad miracle of dot. science at a time, Canaveral. Counting down. 5, 4, 3, 2, 1. Canaveral, are you reading? All clear, Nova. Indicators look good. The ship should be cruising Jupiter's orbit right now. Visual confirmation will be possible in 32 minutes. Afraid the speed of light is on the slow side these days. How does it feel to break the laws of physics, Canaveral? We're all pretty excited down here in NASA, I won't lie. Excited enough to tell me where you got the original data? Not in a million years, Nova. You're gonna wear yourself out if you carry all this stuff. अब मैंने शायद सारी स्लेट्स तो कलेक्ट कर लिए हैं ना. कलेक्ट ऑल द स्लेट्स. अभी भी बाकी हैं क्या? थोड़ा घूम के देखते हैं, शायद कलेक्ट कर सकें. When I accepted the assignment up here, ये लास्ट वाला ही मिल गया bring हमें. a couple of personal items. Some psychological studies said it helped when you're away from Earth this long. I brought my grandmother's old abacus. 4000 credit. I would play with it on her lap, and she'd teach me the Russian for all the numbers. She, just got word that she passed. The next shuttle isn't for 3 months, so I won't be able to go to the funeral. Goodbye, Babushka. Thank you for teaching me math. It brought me to the moon. शिप कहाँ, चलो निकलते हैं फिर. बैरिड भी आ गया. भागने से बेटा उड़ के जाओ. Hey, you might want this. चलो निकलते हैं यहाँ से. बाय द वे हमें जाना कहाँ है? ये शिप वाकई बहुत छोटा है. Hey, you're back. थोड़ा साइड दोगे गाफिल? Glad to see you're back in one piece. थैंक यू. अब देखते हैं कहाँ जाना है. सोल पे ही जाना है ना. सोलर सिस्टम. अब हमें अर्थ पे जाना है. नासा हेडक्वार्टर आई थिंक. नासा के लॉन्च टावर. ठीक है. हम अर्थ के पास आ गए. अब जहाँ हम अभी रहते हैं वहाँ अब कोई नहीं रहता. चलो चलें फिर. सीधे शिप से एग्जिट करते हैं ना. हमें उम्मीद था यहाँ से भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. ख़त्म हो गया.
रेडिएशन से। यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है फिर। लाइट क्या बात करनी है तुम्हें? Dusty. Dusty. Let's talk. Hey, so I'm really enjoying our time together. Thought you should know. It's been a long time since I worked with someone so closely. I didn't realize how much I missed it. And you haven't stopped me from looking into this stuff with Irvin either. So, thank you. If it matters to you, it matters to me. See, that's what makes you a good captain in my book. You're supportive. On that note, I do have some news about Irvin's case. So, I wanted to let you know that I heard back from my contact, and I think you'll want to hear this. They sent me a copy of some public records. It's interesting. Okay. There was a claim filed against Irvin accusing him of damaging their investments. Looks like Irvin didn't even enter a plea. No, please make him seem guilty, na? I don't understand how Irvin could do guilty of that. Well, if it was Irvin, I do want to understand that. Because I just can't believe it. Anyway, this mining corporation, Hephaestus, sued Irvin, claiming he irreparably damaged their mine. They said he killed the apex predators in the area around the mine, which led to herd creatures overeating the grasses. That caused the soils to release too many gases too fast, which cost Hephaestus a ton of money. Seems plausible. The explanation is sound, but why would Irvin do that? He wouldn't. So anyway, according to the court documents, there was a witness for the defense. Okay. Who was a no-show too. Then Hephaestus won by default. They tried to take his apartment, but because it's in my name too, they couldn't. Sounds like the case is closed. That doesn't mean we can't do anything about it. And if nothing else, I just want to know more about what happened to Irvin. So here's what I was thinking. I can persuade my contact to keep digging a little bit more. I don't want to press our luck, so I'll just ask them to follow up on one thing. Should I tell them to investigate the company more or look into the witness instead? Investigate the company some more. Pay your smuggler contact to investigate both. For that much money? They'll do it. You know, this investigation is time-consuming, but it's also pretty cathartic. Who knows? Maybe if we solve this case, it'll mean a better future for Gagarin. But that's thinking too far ahead. Anyway, Captain, thanks for checking in with me. It's okay. तो आई थिंक इसका कोई दोस्त है पुराना एल्विन, वो मिला है 20 साल पहले इसका कांटेक्ट उससे हुआ था, बट अभी मिला है ना? तो इसलिए उसके कुछ सबूत मिले तो उसे ढूंढने के लिए हमने पैसे दिए इसे कि जाके ढूंढो, अगर मिल जाता है तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नासा लॉन्च टावर। क्या इस गेम को बनाने में ना बेथेस्डा जो है, इस गेम को बनाने की कंपनी जो ओनर है, उन्होंने नासा की हेल्प ली इसे बनाने में। तो नासा का नाम तो आना बनता है ना भाई। I bet that elevator shaft will take us deeper inside NASA. Might need to work through some rubble. I think यहाँ से जा सकते हैं ना? पावर सेल कहाँ से लाए हम?
इसमें से निकाल सकते हैं क्या? अच्छा ये तो पड़ा हुआ है। Take a moment to go through your things and lighten the load. एक ही से काम हो गया। एक आध और पड़ा है क्या? यहाँ से निकाल सकते हैं इसमें से अगर पड़ा हो तो। आई थिंक इसमें नहीं पड़ा है। हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, काम ही आएगा हमारे। जिस हिसाब का यहाँ सामान है ना, कुछ तो खतरनाक हो सकता है। आ जाओ। एक्चुअली बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है शायद। यहाँ कुछ है नहीं है क्या? इतना ही था बस। कोई रास्ता तो होगा आगे जाने का। नहीं आई थिंक बस इतना ही था यहीं तक। अब इसके ऊपर तक कैसे जाना चाहिए? यहाँ से चढ़ के जा सकते हैं। इसको निकालें। बैठ आजा भाई। आ गया क्या? चलो आ गया तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ही सेल उठा लेते हैं ना, आगे काम ही आएगा। इसे ले भी नहीं सकते वापस। इसके ऊपर जाना है अपना। थोड़ा रुको, ऑक्सीजन प्रॉब्लम है थोड़ा। अर्थ का क्या हाल हो गया भाई? पृथ्वी क्या थी पहले, क्या मतलब क्या है अभी, और इन्होंने क्या होते हुए दिखाया है फ्यूचर में। आई होप ऐसा कुछ ना हो, या जिस हिसाब से आजकल के काम हुए हैं ना उस तरह से इसका ये हाल होना तय है। हो सकता है कुछ भी हो, कुछ नहीं कह सकते हम। कहीं से रास्ता है ऊपर जाने का? इस बड़े पाइप से तो नहीं जा सकता ना ऊपर हमें ना? नहीं। How terrible it must have been for them to watch others escape while they realized it was over. यहाँ पर सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, यहाँ से चढ़ के जा सकते हैं शायद। ये काम करेगी लिफ्ट? आई थिंक यहाँ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमें। ओ बच गया। अभी नीचे जाता है थोड़ा ना सीधा। यहाँ से यहाँ जंप करके आई थिंक वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं इस चीज़ को ना। डन। देखते हैं कहाँ तक रास्ता बनता है। चलते जाते हैं, रास्ता है अभी। जहाँ तक रास्ता दिखेगा वहाँ तक तो जाएंगे कम से कम।
यहाँ कुछ है क्या? You seem overwhelmed with things. Really looks like this one almost made it to launch. Wonder what the final problems were. ये क्या है? ये इस जगह घेरेगा भी मतलब है ना? Looks like the lift is offline. Maybe we can restore power. Let's look around. ओके, देखते हैं ना पहले, चल के एंटर नासा। इसमें चलते हैं, इसमें होगा शायद पावर। जी हाँ बिल्कुल है। कुछ मिला है, देखते हैं क्या है। पहले ये लगा दें सेल। चलो निकलते हैं, आओ बैठ। ठीक है, फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट नासा। हाँ समझ गया, फ्लैश ऑन फ्लैश ऑफ कैसे करते हैं पता है मुझे। Crew preparation area. I can't imagine how tense and chaotic it must have been. जो सामने दिखा है वो तो हमें पता है ना, जो नहीं दिखा है उसको भी ढूंढते हैं, शायद मिल जाए कुछ। लॉन्च प्रोसीजर, Station log. Dr. Judith Tatien. The recent delivery from Mars is unsettling. I was expecting rock samples or maybe fossils of microbial life. Instead, Dr. Victor Isa comes with 2 members of the military. Everything they have brought back is under wraps. What could a theoretical physicist need with a sample from Mars? Okay. Station log. Dr. Judith Tatien. I have been trying to cozy up to Dr. Isa, Victor, to see what is going on. His team has completion log. Dr. Judith Tatien. I have never been so nervous since I defended my dissertation. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical metals, atomic bonding, even a half-hour divergence into magnetism that I'm... Station log. Dr. Judith Tatien. I have never been so nervous since I defended my dissertation. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical metals, atomic bonding, even a half-hour divergence into magnetism that I'm pretty sure was to throw me off the trail of what we were actually talking about. Then I got to see the lab. I don't know how much I should say, but the periodic table just got so
Find information about Martian example. यहाँ से रास्ता नहीं होगा ना शायद, हमें नीचे ही जाना पड़ेगा ना। चलो चल के देखते हैं। Looks like a structural collapse of the underlying strata. Typical of karst topography. Do we actually need all that stuff? क्या पता कहाँ ज़रूरत पड़ जाए ना, उठा देना चाहिए। शायद यहाँ पे आर्टिफैक्ट हो सकता है मे बी। They had a museum, but this whole place is a museum now. Anyway, looks like an exit at the end of the hall. यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता होगा ना शायद। यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता नहीं, ठीक। Find information about the Martian sample. छोड़ो, नहीं चढ़ पाएंगे, वैसे घूम के जाके चढ़ना पड़ेगा ना। ओके, ये वो है। ये का बनाया था नासा ने। I just don't understand where these calculations came from. There's something wrong with the math? I think it's quite straightforward. That's not what I'm asking. We've यहाँ had क्या करना है? no success extracting even Find a sample of information about material from the object. prototype gap No drive. explanation for the gravitational effects. No motion graph to explain its harmonic frequencies. I can't even establish a melting point. Judith. But you've had me building these prototype colliders for months. And now you want me to pump helium-3 into it based on this equation you've written on a goddamn napkin? I just need you to trust me. I have been trusting you. We keep slamming our heads against a brick wall, getting nothing. And you keep coming up with something new to try. Like, you know what's going to happen. Where are you getting your information? Rooms like this across the globe. I'm sorry, Judith. Science has figured out how to Look, save I'm our not here, species. okay? Somewhere off These base, are the I'll tell you heroes. everything. But I'm not lying, okay? अब यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता। Discover something important here. I promise. Final days of humanity on Earth must have been a special sort of hell for hopeful scientists. कितना कुछ खतरनाक होना है क्या फ्यूचर में। कहाँ से जाएं हम उस जगह? वहाँ से जाने का रास्ता बताओगे बैड? शायद यहाँ से रास्ता हो ना, हो सकता है प्रोबेबली। चल के देखते हैं ना, पता ही नहीं है कहाँ जाना, तो चलो जाने से ही तो पता चलेगा ना।
सब चीज़ों का कुछ नहीं करना मैं काम। नहीं ठीक है। हमें पावर सप्लाई देनी है यहाँ। यहाँ कुछ है, उठा लिया जो। आओ चलो बैठ आओ। आई थिंक हम पहुंच ही गए। सही रास्ते पे हैं हम शायद। कंफर्मेशन तो नहीं कह सकते, हाँ सही रास्ता ही है। हमें नीचे जाना है अब। यहाँ भी कहीं पावर देना पड़ेगा ना। ओके वहाँ पावर देना, यहाँ से सेल उठा देते हैं ना। चलो अच्छा है, गेट खुल गया यहाँ से। स्टेट वाटर ठीक है, सीलेंट नहीं चाहिए। यहाँ से ऊपर कहाँ जाना है? ऐसा चाहिए था रास्ता। Time to shine. यहाँ है कौन लड़की? And our adventure continues. और बाकी कहाँ है? ठीक है खत्म। भाई अभी भी जिंदा ही है। आई हटो। All yours. ठीक है मार दिया। अभी एक और बाकी है ना, वो कहाँ है? थोड़ा उसके नज़ारा देखें। ओके डन। आई थिंक यहाँ से नीचे जाना है ना हमें। पावर रिक्वायर्ड। आई थिंक यहाँ से देनी पड़ेगी पावर क्या?
यहीं देनी है पावर शायद, यहाँ से ऑन करनी पड़ेगी ना। आओ चलो, आई थिंक काम बन गया होगा अब तक। ये मिशन आई थिंक बहुत लंबा होने वाला है। ये काफ़ी नीचे तक आ गए हम पृथ्वी में। चलो चलते हैं, जब इतना आ गए तो और आने में क्या दिक्कत है ना। Imagine if they hadn't been able to convince people to invest this much. I wonder if humanity would still be here. सोचो भाई। NASA research computer. Project log. Dr. Victor Isa. We turned on the prototype today. The gravitational field around it began to fold. Project log. Dr. Judith Tatian. I watched the gravjet test from the moon today. It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. So many things were under wraps before, but now everyone wants all the publicity they can get. I'm already seeing proposals for manufacturing androids of drives, expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming and worrying. The artifact isn't far now. It could take years, But look at all decades, this before stuff. we know what all these side effects of operating a grav drive can be. But no one wants to hear that right now. Okay, यहाँ पे A gravity bunch नहीं of है। pioneers racing towards the edges of the frontier without knowing about the grizzly bears in the mountains. Advanced lock। ये भी नहीं वर्क करेगा, ये करेगा नहीं। ये वर्क नहीं करेगा तो शायद ये करेगा फिर। एक इसका कोई काम है नहीं। ये अब ये काम करेगा, उसके बाद फिर नहीं, ये वाला ठीक है। Always a pleasure watching you work. ये क्या हुआ? Come on. Prototype device. I never actually got to visit your labs back when we were working on the grav drive projects. Seems like ancient history. I know what I'm seeing, Victor. My name is Dr. Victor Isa. And if you're listening to this, So it wasn't just you a probably fluke, already know the a terrible but inevitable I was young disaster. when I first headed the retrieval अच्छा इसके अंदर artifact है? gravitational anomaly on Mars. But I kept what really happened that day hidden from everyone except one. Take the artifact. Even she didn't believe me at first. जो कि इसके अंदर है ना? But I have no reason to lie to anyone now, so I hope you'll accept this confession, whoever you are. When I touched the anomaly, I experienced 12 days of lost time. I met myself. He told me everything that has since come true. The grav drive equations, the tests on the moon.
Earth's atmosphere sputtering away because of what we had done. But he also told me about a city thriving on a planet orbiting a distant star. Human culture, art, music, lifestyles evolving and shining brightly across all of space. What price would I be willing to pay for that future? Maybe you don't believe me. Maybe Judith was right and I'm just a coward who wants to believe his mistakes were justified. But everyone has forgotten about the real origins of the ground drive, this artifact from Mars. I hope you make better use of it than I did. हम यहाँ से जाएं कैसे इसके अंदर? यहाँ से तो जा नहीं सकते ना? इसके अंदर जाने का रास्ता तो कहीं से ना कहीं से तो होगा ना? आई थिंक यहाँ कहीं से नहीं, आगे कहीं से हो, शायद नीचे। तो इस जैसे कि आपने ये अभी ये जो आप सुन रहे थे रिकॉर्डिंग जिसकी भी थी, उसने आर्टिफैक्ट को छुआ तो कहीं और पहुंच गया। जस्ट लाइक सपोज करो कि वो अपने फ्यूचर सेल्फ से मिला कि हाँ 2 मिनट रुकना, वो अपने आप से मिला लेकिन फ्यूचर वाले से। इसे भी खोलना पड़ेगा। सो उसे थोड़ा सा ये नहीं होगा तो फिर आई थिंक ये होगा। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आई थिंक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। डन। डन और डन। खुल गया। अब हमें जाके आर्टिफैक्ट लेना है, ठीक है। तो वो जैसे कहानी ये सुना था मैं, हाँ, कि वो अपने वापस फ्यूचर वाले से अपने किसी और यूनिवर्स के इंसान से मिला। Constellation, we've arrived on the surface of Earth. We Leave need to NASA. discuss what you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. ओके तो हम लड़ने वाले हैं क्या अब यहाँ पे? चलो निकलते हैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से। आया वो स्पेसर है यार को। इसके लिए गन चेंज करना है तो गन अच्छी होनी चाहिए ना थोड़ी। क्या चीज़ें मिली हैं हमें? डेजर्ट ईगल काफ़ी अच्छी है। ओके लेट्स चेंज द वेपन। इसमें एमो नहीं बना, इससे मारता ना मज़ा आ जाता। अभी ये इससे यूज़ करते हैं ना। Where'd they go?
ये स्टार वोन खत्म है। हेल्थ नहीं है, हेल्थ लगाने तो पहले। यहाँ से उठाने से अच्छा है यहाँ से निकलना चाहिए अभी। यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? छोड़ो, वापस उसी जगह चलो। यहाँ से ऊपर जाना यार, कैसे जाए? राइट। चलो नीचे चलें फिर। One time I jumped off the cliffs of a planet with almost no gravity. Fun at first, but took forever to get down. कहाँ से निकलें बताओगे? थोड़ा सा रास्ता बताओ कुछ। ऊपर जाना, एग्जिट वहाँ है शायद। यहाँ से ऊपर जा सकते हैं ना, यहाँ से निकलने का रास्ता है शायद, हमने ध्यान नहीं दिया बस। ठीक है, हम यहाँ से निकल तो रहे हैं। एक्सपर्ट लॉक लगा यहाँ पे। Take the artifacts. This ends. बस हो गया, बस हो जाएगा। ओके, खत्म हो गया शायद, बस खत्म। हमने सुना मतलब खत्म हो गया मुझे। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा मे बी, लेकिन अभी भी हमें ऊपर जाना है ना। सीधे आपसे ऊपर ही मिलते हैं फिर। Your hunt ends here. Struggle. Witness the infinite. हम कुछ करना चाहते हैं, एकदम से फाइट स्टार्ट करना बहुत अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले तो ये यूज़ करो, ठीक है। इसका तो ठीक है, जो है ठीक है। ओके,
क्या यूज़ करना चाहिए? कोवैक्स ये लगी हुई है, ठीक है। हमें 9 को छोड़ के बाकी सबको यूज़ करना है। फर्स्ट फाइट, क्या बात है। चलो ये हो गया। इसके बाद पहले हम अपनी गन रीलोड करें। रीलोड ही है, हम फायर ही नहीं कर पाए। आई थिंक टाइम आ गया। Oh yes, I know how this ends. Quit it. Whoa! Come on! बैट था यार, मैं बैट को मारा। Come on. Your eternity ends. दो कहाँ गए? यार हेल्थ की हम सत्यानाश किए बैठे। बैट कहाँ भाई? कहाँ बंदा? Eclipse them. कहाँ गए? खत्म एक। ये फायदा होता है डैमेज बढ़ाने का। एक बार कहाँ? आओ बैठ, निकलते हैं। मतलब दोस्त भाई जो भी है सब निकलते हैं। यहाँ कहीं हेल्थ है? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ कोई हेल्थ होगा। ओके, इसमें क्या है? कमाल है भाई, ये पहले क्यों नहीं मिला हमें? रुको रुको रुको, अब नहीं, अब नहीं आ जाएगा भाई हमसे। रुको, इतनी बेटर गन, कमाल है भाई। वाओ, क्या डैमेज है इसका भाई साहब, क्या डैमेज है। तो इसे बी पे सेट करना, तो इसे करते हैं हम। आई थिंक हमें इस वाली को अलविदा कहना पड़ेगा, या इस वाली को कहते हैं ना, ठीक है, इस वाली को अलविदा कहना पड़ेगा। और ये है सबसे बेस्ट गन। Figure yourself out if you carry all this stuff. अरे तुम टेंशन ना लो, हम सब संभाल लेंगे। थोड़ा सा और सांस आ जाने दो। अरे क्या बात है भाई साहब, ज़रा 2 मिनट दो मुझे। मैं टिकट भी सेट कर दूँ एक जगह। मैट, ठीक है, इसको सेट करते हैं कहाँ पर? 7 पे। डन। देखो दोबारा से करना था, कुछ क्या था? मेडिकेट को कहाँ सेट किया? 7। ये फिर ये टॉप है, और इसको 7 रखना चाहिए। आई थिंक अब हमें इन दोनों को साथ रखना चाहिए, टॉप है को इसको। ठीक है, चलो को देखा जाएगा। हमारी पावर्स खत्म हुई, हम फिर से ना। Fine, let's go. This never gets old. 6 को छोड़ के आई थिंक सीओ दबा। वैसे से क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या मारेगा भाई, मज़ा आ गया। ऐसे ही मारते ना मज़ा आ जाता।
जहाँ तक उम्मीद है यहाँ भी होंगे कोई ना कोई लोग, है ना? नहीं है कोई। बैविट कहाँ है? बैविट हमारा भाई दोस्त, कहाँ हो तुम? थोड़ा हेल्थ हो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? चलो आगे बढ़ा जाए, कुछ काम की चीज़ें मिले तो उठाया जाए और यहाँ से निकल जाना बेटर ऑप्शन है हमारे लिए शायद। यार ये इसका बहुत दिक्कत होता है ऑक्सीजन का। यार ये टेप वेप नहीं चाहिए हमें, निकलते हैं यहाँ से। चलो अंदाजे से मुझे लगा यहाँ भी बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है, जहाँ तक उम्मीद है। ये शॉटगन बहुत कमाल की है भाई साहब। मस्त शॉटगन है भाई, ये बहुत मस्त है। यहाँ से भी हंसता है। चलो चल के देखते हैं क्या है। चलो अब थोड़ा तेज चल सकते हैं। ठीक है भाई साहब, इतनी चीज़ें एक साथ लगाएंगी। आई थिंक यहाँ सब सीधे बाहर निकलना ना। अब कोई फाइट वाइट का ऑप्शन है क्या मेरे को? खैर वैसे मैं चाहता नहीं ऐसा हो। ओके ये क्या है? नहीं चाहिए। तो आई होप यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, होपफुली। बट ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। या बिल्कुल हो सकता है। या कहूँ ऐसा हो गया? नहीं, मेरे को देख के लगा कुछ तो तगड़ा खतरनाक होने वाला है। ये गैस में लीव ना सा। ठीक है, एक काम करते हैं, हेल्थ लगाते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है हो सकता है कि फाइट हो। अरे नहीं होगी, टेंशन की बात ही खत्म। वाओ, टॉक द एमएसवी, ठीक है। बट ये एमएसवी कहाँ है? यहाँ कुछ है? आई थिंक ये सब हमने पहले उठा लिया ना। ये अपने लोग हैं? अब देख के लगता नहीं है कौन अपना है कौन पराया, कब क्या हो जाए पता नहीं। अच्छा हम भाग नहीं सकते देश। ये सबसे बड़ा भाई डिसएडवांटेज है कि हम तेज़ नहीं भाग सकते। अब हमें नीचे कैसे जाना? यहाँ से कूद के जाए? आइडिया बुरा नहीं है, वैसे जा सकते हैं। आई होप हम सही जा रहे हैं मे बी, क्योंकि कंफर्म तो नहीं कर सकता मैं। Let's talk. When you have time, of course. ओके तो बैविड से बात करते। कहाँ है बैविड? चलो, क्या हुआ भाई? You know, I needed this. Exploring the galaxy with you by day, investigating the mysterious legal woes of my long-dead spouse by night.
Glad to see your sense of humor back. Vasco never appreciated my humor that much. I was just remembering how I'd pour my heart out to Vasco so many times. I told him all about Irvin. He showed me a chart of how sad I should expect to feel. Okay, सही बात है भाई, वो तो रोबोट है ना. I'm sure Vasco was a reliable co-pilot. Oh, we got to point B many times just fine. Top-notch co-pilot. Would recommend him to anybody. सही है भाई, अच्छा. Anyway, I'm glad you're here right now because we have things to discuss about Irvin's case. I heard back from my contact. They looked into Hephaestus Mining Corporation. Okay. Looks like they paid off the judge. सही And है that's भाई. not all. My contact really came through for us. Turns out the witness was threatened until he withdrew his testimony. And thanks to our contact, we now have the receipts. सही है भाई. We should hire a lawyer now. पहले evidence भी तो चाहिए. Evidence तो शायद है ना. I'm glad you're confident already. I'm not, though. I'm worried we don't have enough evidence to go up against a massive corporation like that. Okay. So I know a cyber runner who has accessed corporate archives before. They can dig into the classified archives before we go to a lawyer. We can pay extra for them to use less legal methods to obtain information, but that adds risk. Okay, तो let's not pass our luck. यार उसे अपना साथी ढूंढना है ना, तो पैसे दे देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है. और तुम हमारे साथी भाई, भाई हैं अपन. I'll cover any costs for bribes or fines that go over that amount. Depending on what they find out, it might be time to talk to a lawyer. I'll see if I can find one. Whew. Taking on Hephaestus isn't going to be easy. And I say this as someone who's fought the Crimson Fleet. Maybe I should study up on the art of cross-examination. Might come in handy at the trial. I think that's the lawyer job. Let's focus on getting evidence. I think you'd make a great lawyer. नहीं, इसका मैं नहीं कह सकता कोई जवाब. I think you need a nice long massage to distress. ना ये ठीक है. That's solid advice. Know your actual limitations, and not the ones granted to you by a mysterious superpower. Anyway, let's go adventure while we wait on the cyber runner to get back to us. या हमें अभी पता और सुपर पावर्स भी तो कलेक्ट करनी है ना, जो भी और हैं वो भी. अच्छा, चलने के लिए बोलना पड़ेगा. आ जाएगा. आई थिंक आ जाएगा खुद. अब यहाँ से कहाँ जाया जाए? कहाँ चलना प्राइवेट? यहाँ से कूदें. ठीक है, वहाँ से जाना था. हमें वहाँ जाना, हम सीधे सीधे कूद के जाए ना. हमारे पास जेट पैक तो है कि नहीं है? अब ठीक है, कोई बात नहीं. जैसे आए थे वैसे जाते हैं. ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है. बाद में कूद जाएंगे अगर कूद नहीं है तो. वैसे कर सकते हैं ट्राई. हाँ, ये अच्छा ऑप्शन है. इतना मुश्किल था नहीं वैसे ही. ओके, अब हमें लोगों से बात करनी है जो लोग हमें मारने आए थे अंदर. यू नो, आर्टिफैक्ट चोरी करना या छीनने, ऐसा हम ये कह सकते हैं. चलो जल्दी सीधे मिलते हैं. क्या कहते हैं ये लोग हमसे? क्या बात करना चाहते हैं? टॉक टू MSC. लो आ गए हम. Do you understand now why I asked you to come here? The artifacts unlocked the secret of interstellar travel, at the cost of Earth. An easy trade, honestly. Why have one world when you can have all the settled systems?
Okay. Sacrificing Earth was not worth having grab drive. We lost our home. इस बात पे दम है भाई. Humanity's destiny was the star anyway. I still don't quite understand what I found. Can you explain? सही बात है भाई. If Earth was a small price, I have to question your ability to assess value of any kind. Assuming we weren't going to lose it anyway. War, disease, famine, all the classics. Don't you see? The power of the artifact forced humanity to the stars. They didn't get to make a choice. How many would have chosen Earth? What gave Victor Isa the right to choose for them? You see the hypocrisy in what the emissary is saying, right? They don't want to rob people of their free will, but then they steal the artifacts for themselves. In the wrong hands, the power of the artifacts can make anyone a tyrant. That's why we watch over them. The only thing you're watching out for is yourself. If you both understand someone other than a starborn made a decision. This was right that it need to be the right hands. That is right, the only real rule is who gets all the artifact first. No. Right hand हमारे हिसाब से you're both wrong. It's time to discuss. Traditionally, people have preconceived notions of which hands should get power, and it's not always the hands of good people who worked hard for it. But if the choice is to prevent abuse or encourage guaranteed abuse, then I think this is a wise choice. Join me, old friend. We can collect the final pieces together. Oh, no, you don't. You're not his old friend, remember? You're from another universe. Don't try to manipulate him. Okay. I couldn't win you over on philosophy. How about pragmatism? I'm more powerful than the emissary. Than any other starborn. And you might not understand why, but I want you to succeed. You've never gotten this far before. I need to see what happens to you. I'm siding with embassy. Finalize with our hunter seems like the winning strategy now. I'm tired of both of you. क्या हंटर के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसमें जीतने की ताकत हो हम उसके साथ खड़े हैं. कभी कभी ताकत हम में होती है और हमारे साथ वालों में होती है. समझ रहे हो बात को? Of course you are. Between these two, that's the only sensible choice. Yeah. Thank you. Well, can't say I didn't try. We'll settle this at the usual place. अब ये ऐसे हो गए जैसे दोस्त होते हैं ना बात करने के लिए. पहले हम डरते थे क्या है ये क्या नहीं. You're lucky I'm a man of my word. I'll see you there. I'll see you there. 10,000. Stay for a moment. You must have questions about what happens next. Okay. Okay, another. जो भी ठीक है. What's the Bahi temple? Why are we waiting? We couldn't attack the hunter now. What should I do to prepare? Are you coming with me? I'll meet you in orbit above the buried temple. We'll face what's there together. Okay. बस ये है temple है क्या? There's always a final artifact in a specific Final temple. artifact. The hunter and I agreed that whomever you sided with, the other would wait there. Okay. Expect anything and everything. Other starborn human mercenaries and defenses, alien creatures under mind control. It's all fair game. Okay. He and I have made a number of agreements over the years, if you can even call them years at this point. We let him go. In exchange, he'll wait at the buried temple. You'll be able to prepare any way you can before then. Okay. तो prepare के लिए मुझे क्या करना There पड़ेगा? is a temple for every artifact. You should find as many as you can. You'll need their power. Okay. तो ठीक है, इनसे हमारी बात हो चुकी है.
ये बैड है हमारा भाई। चल एक काम करते ना। अच्छा इन दोनों की अलग अलग शिप्स हैं। ये तो हमने नोटिस ही नहीं किया भाई कि इनकी अलग अलग शिप्स भी हैं। तो ओके गाइज़, आज के वीडियो में यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, बट थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो का, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि यार थोड़ा सा मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे जिस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया था। तो चलिए, वॉच करने की थैंक यू आपका। सब्सक्राइब कीजिए कीमत झांसीवाला को, पसंद आए तो लाइक कीजिए, वरना चल रहा है जैसे चलने दो। आप स्टोरी को एंजॉय कीजिए बस, और क्या चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। टाटा बाय बाय।